अस्सलाम वालेकुम। आज जिन एक्टर से हम मिल रहे हैं, ही इज़ नो स्ट्रेंजर टू टीवी। वी सीन हिम इन मल्टीपल रोल्स ओवर द पास्ट 15 years. He plays the villain quite often, but I think he's a good guy in reality. We'll find out during the interview. Also, इनको अक्सर मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत देखने लगती हूँ एकदम से। एंड जो मेरा इनके बारे में वैल्यूएशन है वो ये है कि ही इज़ द सॉर्ट ऑफ पर्सन हू डजंट हैव प्रिटेंसेस। ही सेज व्हाट ही वांट्स टू से एंड goes on with life. So I'm hoping this interview is just as honest and just as entertaining. Thank you for meeting me, Hassan Ahmed. It's a pleasure. Thank you. Thank you for the lovely introduction. You are somebody जो बगैर सोचे जो दिल में आता है बोलता है, ये मैंने सही evaluate किया ना हाँ अब तक। बिल्कुल सही evaluate किया, लेकिन अब मैंने अपने आप को री-evaluate करना शुरू किया कि ये नहीं करना चाहिए। ये कब हुआ ये तो पता नहीं चला। I think किसी की भी you shouldn't hurt anyone by your words, and if you feel that they're doing bad, or if they're not being up to the mark, then it's not your call to call them out कि यार ये चीज़ On सही a public social media platform. on a public social media platform. हाँ, it can get pretty distressing. Yes. Yes. So I've tried now to just control my emotions, and मैंने एक और इंटरव्यू में नहीं I posted a social media message in which I said कि mostly when you're calling out people, it shows your negative side in a way that either you're being jealous or you're being insecure, right? And no one kind of admits to it, but I am going to admit to it that this happens when you actually are disliking something, someone who you dislike, your colleagues, or maybe people working in the industry. और यहाँ पे usually यही होता है, you get into problems with people working in the industry or your colleagues, or you don't like how they look, or what they wear, or what sort of followers they have, and everything. So there's a little bit of hint of jealousy in that, and insecurity, and I don't want to portray myself as that man who has that little bit of complexes. So that's why I have re-evaluated myself कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, और फोन को दूर कर दें जब ये गुस्से का एक आए, फोन को कहीं दूर फोन जाके को रख दूर दें। करते हैं आप। किस- That's है so ना? true. That's so लॉक nice. करके रख दें हाँ, कहीं जब तक वो फेज ना गुजरे। हाँ, असल में बात ये है, लाइक आई सेड, यू बीन वर्किंग फॉर 15 years. Right. तो एक्टर तो चाहता है उसकी एक्टिंग की बात हो ना, उसकी जगह आजकल की दुनिया ऐसी है कि पहले सोशल मीडिया पे जो उसने कहा होता है, वो जो बात गलत बात जो कही होती है, हाँ, उसकी बात होने लगती है। तो ये भी तो है कि यू वांट टू बी टॉक्ड अबाउट। ये भी Your है, work. and then एक तो जैसे I mean, if I said something about someone, let's start with that, and people are producing that 5-second clip and posting it on any social media platform, and then the fellow, if I've said something about a colleague, then that colleague is disappointed, and then they tell me that what you've said is not right, or it shouldn't have been said, and then on a couple of occasions I've apologized to people publicly as हाँ, well. you have. 1, 2, and then I am associated with the famous model and an actress as well, who's married to me, right? So when people call her for interviews, तो उस पे भी यही हुआ कि there was an interview that I saw that was for 1 hour 30 minutes, and I am looking at the interview, and after 45 minutes I start feeling a bit I'm uncomfortable कि हसन के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। The 50th minute I'm like, चलो यार कोई बात नहीं, it's my wife, right? On the 60th minute, now the interview is about her career and her drama, Pinjra. तो उसमें जब ये हुआ, and after 1 hour 10 minutes, I was like, यार these people cannot talk about me, why me? And Sunita, one thing I have to say about her is she's very naive. If you talk to her and you kind of keep asking her questions, she will not really realize what sort of questions are being asked, and she will start answering those questions without thinking इनमें कुछ है या कोई ऐसी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं जानी चाहिए या जानी चाहिए. There's always a filter about a part of your life that should go on air or shouldn't go on air. So she's naive that way, and वो बातें हो जाती हैं तो मुझे फिर गुस्सा आता है. जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं फिर कुछ बार मैंने 1-2 दफ़ा मैंने डाला सोशल मीडिया पे कि यार दिस इज. लेकिन आप घर में दूसरे कमरे में जाके भी तो बता सकते थे. There's a question that has been asked and told to me by a lot of people. People will ask you all your life. Be prepared. I don't disagree with that. है ना? But I don't absolutely disagree with what you've said कि आप दूसरे कमरे में भी जाके बता सकते थे. But there are certain things that people don't know, and I just felt that I wanted it to come out on. If there's an interview on social media,
I want to come out and say a couple of things on social media, on that platform. And बहुत सारे लोगों ने कहा आपने गलत किया, मेरे घर वालों मुझे ने भी लगता है। कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, बट आई फील कि मैंने सही किया, अच्छा। एंड सम थिंग्स नीडेड टू बी कॉल्ड आउट फॉर. मुझे लगता है हाँ. कि कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको क्रिटिसाइज़ उन्हें करना होता है, तो वो आपके इतने करीब होते हैं कि आप उन्हें फ़ेस टू फ़ेस कहते हैं। और हाँ, कुछ लोग होते हैं मे बी वर्क कॉलीग्स जिनसे सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, जिनके बारे में आप पब्लिकली अपना स्टांस देते हैं। तो दिस इज़ समबडी हु इज़ विद यू एवरी डे, शी इज़ I agree पार्ट ऑफ with योर you. लाइफ। I agree with you. फिर भी आपको लगता है आपने सही किया। I agree with everything that you said, and like you said, people who are close to you, they have that leverage as well. That you know, आप कोई अगर चीज़, if Sunita is very close to me, which she is, तो कोई चीज़ उसने कह भी दी, तो you know, I'll wait for her. A lot of times I have waited, कि you know, let's let her come home and then we'll talk about it आराम से. And बहुत बार ऐसा हुआ भी है, and बहुत बार मेरी तरफ से भी ऐसा हुआ है that you know she's waited for me, and then you know we get back from our workspace and we come back home and we talk about it. We talk about things. But इस वक्त गुस्सा भी था. You're right. जो आपने अभी बात बोली कि फ़ोन आप अपना दूर रख दें जब आपको गुस्सा आया हुआ हो. बट मुझे ये था कि प्रीवियस इंटरव्यूज़ में भी I'll give you a bit of history as to why I reacted that way. So previous interviews, जैसे एक हमारा बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म था है विद समीना पीरज़ादा जी, उस पे वो इंटरव्यूज़ थे. एक दो और जगहों पे भी इंटरव्यूज़ थे. So everyone would talk about Hassan. Now Hassan is, of course, he's Sunita's husband, but then he's much more than that. I mean, my life, I want you to talk about my wife's career. She has a brilliant career. आप अगर आपने किसी को बुलाया है पिंजरा ड्रामे के लिए, लेट्स सपोज, आप उस पर बात करें. इट्स अ ब्रिलियंट ड्रामा व्हेन इट केम ऑन एयर. सो 4-5 सालों से ना हसन 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 की जब बातें हो रही थी, सो इट काइंड ऑफ गॉट टू मी कि यार कुछ चीज़ें हैं जो जिन पे मैं नहीं चाहता कि ये सोशल मीडिया पे जाएं. यू नो, आई मीन, यू नो, व्हेन यू मैरिड टू समवन, सोशल मीडिया ने एक चीज़ क्रिएट कर दी है कि अब आप सब डाल देते हैं उस पर, and you have removed that transparency that you probably had at one point in time. So I am that sort of a person. I'm old school. I want that. I don't want that transparency in everything. I want some things to be kept to myself and my wife and my children and my mom and dad, and that's it. Even though I'm a social figure, on this, a lot of people say that you know you're a celebrity, you're a social figure, and you know if things come out, then it's there to be. I mean, it's you're a public figure, so you know if it comes out in public, then it's public. But I'm like, नहीं, कुछ चीज़ें अगर आप allow करेंगे to go on that platform, तो वो जाएंगी. अगर आप allow नहीं करेंगे तो वो नहीं जाएंगी. A lot of people delve into personal lives, and there are very few people. हसन, हम भी तो अभी पर्सनली बात करें, हालांकि हमें काम की बात से शुरू करना चाहिए था, लेकिन खुद ब खुद कॉन्वर्सेशन इधर चली गई. आपको नहीं लगता ये एक नेचुरल बातचीत का प्रोग्रेशन है तरीका ना होता है? बातचीत का. हाँ, वो भी सही है. अब एक सेलिब्रिटी को आप इंटरव्यू करेंगे, मैं आपको कर रही हूँ, तो मेरे 10 सवाल आपके करियर के बारे में हैं, लेकिन जाहिर है एक दो सवाल पर्सनल लाइफ के होंगे. आप कहेंगे आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई विल नॉट डिस्कस देम विद यू. लेकिन ये हो जाता है, यू नो, you're famous, bear with it. Again, Please tolerate it. I don't disagree with you. आप सही कह रहे हो. बट मुझे कुछ चीज़ अच्छी बस नहीं आपको लगी. गुस्सा आ जाता है. गुस्सा मुझे आ जाता. डू यू थिंक आप भी इंटरव्यूज़ देते हैं, आप वीडियो पे भी देते हैं, आपके रिटर्न भी आते हैं, एंड यू बीन डूइंग इट फॉर एजेस नाउ. डू यू थिंक सेलिब्रिटीज़ को के पास एक फ़िल्टर अब होना चाहिए कि ये हमें बोलना है, ये नहीं बोलना? क्योंकि देखिए, हमारा तो काम आपसे सवाल पूछना, आपने अपनी लाइन खुद डिफाइन करनी है कि मैं ये बात मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कोई जवाब देने के लिए. डोंट यू थिंक स्टार्स हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये बात हमें नहीं करनी, ये हमारे घर की बात है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आपके, मैं अभी जो बातें मैं कह रहा हूँ उसमें मैंने, लाइक यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन, मैंने इंटरव्यूअर, लेट्स सपोज, मैंने कभी ब्लेम नहीं किया. ठीक है, हमारी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि व्हाट वी वांट टू कम आउट, एंड आई इवन सेड दिस बिफोर. और मेरे ख्याल से बातों बातों में बहुत सी बातें निकल जाती हैं, शायद जो आपने सोची नहीं होती आप कहेंगे. और वो वायरल कंटेंट आप वीडियो पे रिलीज कर देते हैं. इट्स दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि वही आपने जो भी अभी बात की वो भी सही है कि यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग, सो
while talking, बात से बात निकलती है, and people dwell, not dwell really, dwell is a bad word. Naturally, it progresses into a conversation. हाँ. निकल जाती हैं चीज़ें. But मुझे था कि यार बहुत हो गई मेरे पे बात, so let's just quit it. Let's just not talk about me now. I will talk about myself. Okay, sure. Yeah. I think it's वही मैंने आपसे पहले ही कहा, it's part of being famous. Right, कुछ नहीं I कर guess, सकते इसके बारे में. I guess. हाँ, but let's talk about your work, है ना? right. पहले उसकी बात होनी Right, चाहिए वैसे right, भी. right. वैसे तो हमने पहले और बातें कर ली. But are you happy with where you are career-wise right now? Do you still enjoy your work कि आपको एक से लगने लगे roles? I enjoy my work. I did not used to enjoy my work. I think 3, 4, 5 years ago, somewhere down the line, because एक तो acceptability बड़ी ज़रूरी होती है आपको अपने काम में, वो इस तरह से कि I have been doing, like you said, a lot of negative characters, right, in my life. And sorry, just gonna put this on silent. Negative characters में ये होता है कि आप एक वक्त पे आके सोचते हैं, I mean, the kind of fame that negative characters get is not equal to what a hero would get, or that charm वाला fame जो आता है आपके पास, वो हम लोगों को नहीं मिलता है. Normal characters को भी नहीं मिलता है वो, let apart negative characters. So 3 to 4, 5 years down, before, I was like यार ये मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, ये I want to delve into something different. But then I spoke to a couple of people and they said कि if this is your strong point, then why not make it your strong point? You have to, I mean, mostly not in our industry, but in any industry, be it Bollywood, Hollywood, or wherever, mostly negative characters are written in the same way, according to the culture. So how you have to bring something new to it is up to the actor and the director. तो मैंने सोचा कि यार अब मैं इनमें कुछ, with my passion and my hard work, and now that I am in the industry, because मुझे और कुछ करना नहीं आता है अब तो यही करना है. अब तो यही करना है. तो I try to pick out those branches, little branches, discuss it with the director कि यार इसको ऐसा कर लें, कहीं उसमें ओवर भी हो जाता है. I mean, when you start overthinking कि इस सीन को हम ऐसे कर लेते हैं, it goes over the top and you're like यार ये क्या कर दिया, it looks really weird. But a lot of times it works as well. So I've started enjoying that now. कि यार जैसे कि कोई बताए, मैं तो आपके ड्रामे बहुत से देखे हूँ, जैसे कोई एक जिसमें आपने नेगेटिव कैरेक्टर को थोड़ा इनहांस किया. 2-3 हैं. मेरे दर्द की तुझे क्या खबर was a drama for I Dream as well, and उसमें भी psycho type husband मुझे दिखाया था, and and उसमें I used to get really एक आध सीन हमने किए थे जिसमें 3-4 मिनट के लिए वो सीन ऑन एयर जाता था, and this person he used to look, एक ही जगह पे वो देखे जा रहा है और उसकी शक्ल पे ये आईब्रोज पे ना ये दिस टेंशन है, and he's just looking at that, और एकदम से वो कट बैक टू एकदम से, आई थिंक ही इज इन another world. He's thinking about something negative, and or maybe to beat someone or to kill someone, and he would just look at a plain wall, and then एकदम से उसका expression change होता था, and he would come back to reality के अच्छा मैंने चाय पीनी है, I have to go to the bathroom, or I have to go to work. इस बेबी बाजी में भी मैंने दिस ड्रामा दैट आई एम डूइंग, उसमें भी मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की. कुछ जगहों पे वो बहुत अच्छा लगा, कुछ जगहों पे वो बहुत बुरा लगा. आई यूज्ड टू क्या कहेंगे उसको, कुछ जगहों पे मैंने अपनी आंखें बहुत ओपन कर ली. एक इंटेंसिटी ये होती है, एक ये वाली होती है, और वो अच्छा नहीं लगा स्क्रीन पे. शायद आप ज़्यादा अपने आप को क्रिटिक कर रहे हैं इधर, है ना? हो सकता है I'm over critical. मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये क्या किया तुमने, and then I'm like नहीं यार अब मुझे इससे अच्छा करना है. At times when Sunita and me, because we're in the same drama, so most of the time we end up watching together, and when we're watching it, and at times मैं उठ के she doesn't know this, मैं उठ के चला जाता हूँ वहाँ से. She's like कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं आ रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ, I'm just gonna nibble on something. But actually what happens is कि when I look at myself, I'm like यार ये अच्छा नहीं किया तुमने. And then I don't like it. When I walk away, I know what bad I have done in that scene. I learn from it, and then I try to reapply that expression onto somewhere else.
in another drama. So that's how I am. I think I'm very critical about myself. And मुझे नहीं पता अच्छा है या बुरा है. Stress out भी करता है आपको, but I think you learn from your mistakes, I guess. हाँ, और एक और इसमें बात ये है कि हालांकि आप वाकई विलनस रोल के बाद एक प्ले करें, यूजुअली आप ट्रबलसम हस्बैंड ही होते हैं, यानी वही एक मुश्किल मियाँ, अब्यूसिव मियाँ, साइकोटिक मियाँ, अक्सर आप वही होते हैं क्योंकि यही रोल्स होते हैं ड्रामों में. You're not getting bored by it. You keep trying to reinvent it. I want to because I've accepted the fact कि अब लोग मुझे उसमें लेना चाहते हैं. एंड मुझे याद है कि अब्दुल्ला को भी मैंने एक बार कहा था ड्यूरिंग दिस शूट कि यार मुझे अब्दुल्ला सेजा को कि यार मुझे भले एक 3-4 एपिसोड की गिव मी अ गेस्ट अपीयरेंस, बट आई वांट टू प्ले अ स्माइलिंग chocolatey boy, a romantic hero where I'm smiling, I'm looking into the eyes of the heroine and I'm saying अब्दुल्ला ने क्या कहा? So he was like नहीं हसन भाई हम करेंगे. I did this drama with शहरज़ाद शेख जियो का, जिसमें आई वॉज देयर फॉर लास्ट 6 एपिसोड्स, दरार. एंड उसमें वैसे तो जिब्रान, अमर खान और मोमल थे. सो उसमें तो आप स्लीजी मैन बने हुए थे. हाँ. सो व्हेन शहरज़ाद कॉल्ड मी, शी इज लाइक आई वांट यू टू डू दिस फॉर मी. दिस इज लाइक 8 to 9 days of work. ऐसा लास्ट काम एपिसोड्स में आए थे. हाँ, उसने कहा मैंने ये करना है. एंड देन शी ignited the passion in a way that she was like, I will go with you for the haircut, I will go with you for your clothing, we will do everything. I'm like, okay, शहरज़ाद ऐसी है, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है पहले. सो हम गए, हमने सारी चीज़ें कराई, वो किया, कपड़े बनवाए, बाल कटवाए, we decided on a French beard and everything. And then she's like, okay, let's roll. तो सब कुछ प्रॉपर था. एंड जब सब कुछ प्रॉपर था, ये मैंने अपने बारे में नोटिस किया, व्हेन आई गेट एवरीथिंग प्रॉपर देन आई एम एट माई बेस्ट. आई एम लाइक आप मुझसे वो पहाड़ चढ़वा लें. इफ आई हैव एवरीथिंग दैट आई रिक्वायर, एंड शहरज़ाद गेव मी एवरीथिंग दैट आई रिक्वायर्ड. तो वो 8 एपिसोड्स, 6 एपिसोड्स थे, मुझे फीलिंग ही नहीं आई कि हसन अहमद लास्ट 6 एपिसोड्स में आ रहा है. एंड द रिस्पॉन्स दैट आई गॉट फ्रॉम दैट was absolutely amazing. Really? Yes. From Darar? Yes. But you were just there towards the end. But people said the way you spoke. Because you looked very different in it. You were transformed. Two, शहरज़ाद ने एक और, उसको मैं क्रेडिट दूंगा और अपने आप को भी दूंगा, उसने मुझे कहा कि जिस तरह तुम हो ना वैसे ही बात करो. I mean, in terms of if I'm speaking to you, then I'm speaking to you in a normal, natural way. You are that sort of a man, but talk naturally. You don't have to make it up, like usually in dramas we have to make up expressions, camera आप पे आ रहा है, you have to bring out those. उसने कहा नहीं, talk naturally, okay? When you talk naturally, you're at your best. And I only did that. उसमें फिर add-ons ये थे कि how I'm looking at that person, how I'm not looking at that person, and so it kind of worked for me. And then people came up to me, even in the last 6 episodes, I was only there for the last 6 episodes. People came up to me and said, "Ke yaar, we've never seen you like this." True. And I was so happy. I was like, thank you. मैं तो 6 episodes, but they were like, "We've never seen you like this." And I messaged Shahrazad. I was like, "यार ये तो." But what about the masses in general? वो आपसे क्या कहते हैं? वो क्योंकि आप विलन प्ले करते हैं तो थोड़ा आपको अजीब रिएक्शंस कभी आंटियों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, या जब आप अच्छा कैरेक्टर प्ले करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है इन कंपैरिजन, वो बताएं. अभी थोड़ा सा आप कह रहे थे ना बिफोर वी स्टार्टेड रोलिंग. आई थिंक अच्छा कैरेक्टर तो ज़माना हो गया मैंने प्ले किए, सो आई वुडंट नो कि अच्छे कैरेक्टर के. असल में तो अच्छे हैं ना हसन. असल में बस फोन दूर रख लें. It's right. It's been a while since I played a good character, but usually अभी हम गए हुए थे, we were on vacation, so I was just telling you that people they were scared of coming up to me. Really? कि ये नसीर भाई हैं, ये तो, I mean, I don't know, people can actually relate to the character in a way that they don't differentiate between drama and reality. एक्टर और कैरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता. हाँ. तो वो शुरू में तो वो सुनीता के पास आए, बट हार्डकोर जो बॉयज थे जिनको पता था वो आए मेरे पास, बॉस आ जाएं, क्या एक्टिंग किया आपने, बॉस आ जाएं. एंड दे वर टेकिंग पिक्चर्स विद मी. द वुमेन वर अ बिट स्केप्टिकल, एंड आई डोंट ब्लेम देम. बट उसके बाद क्या हुआ कि एज द ट्रिप वेंट लॉन्ग,
So because I was jumping up and down with my kids, I was having fun with my wife, and people were seeing that. So they said कि यार ये बंदा तो normal है. इतना बुरा नहीं है जितना हाँ, टीवी पे लगता है. right. So they came up to me, they took a lot of pictures. Sunita के साथ भी बहुत सारी ली. And now there's a character shift in the drama, which is that there's a new woman in my life that is equally bad what he's doing, but at least he's smiling and he's being gentle to her and all that stuff. तो लोगों ने वो grasp किया कि यार इसकी एक दूसरी side भी है इस आदमी की, जो कि हम समझ रहे थे कि ऐसा ही है. But he's not like that. So then they came up to me, I mean, at twice the amount that they were coming up to me before, and they were like, हसन भाई कैसे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Then they realized कि अल्लाह का शुक्र है कि ये एक्टर अच्छा है, कि ये एक्टिंग कर रहा है, यहाँ पे ये ऐसा है, बच्चों के साथ घुल मिल रहा है, बोटिंग पे जा रहा है, जिप लाइनिंग कर रहा है, चीखें मार रहा है, सारी चीज़ें हैं. So I am a normal person. This is that He's not a bad guy. he's not a bad guy. It's just that I think I do these characters well, so I'll take the credit And for that. और अब आपने सोच लिया कि ठीक है अगर यही कैरेक्टर्स आ रहे हैं मेरी तरफ so let's do them well. है ना? Yes, आपने ये yes, सोच लिया. yes. वो जो एक स्ट्रगल होती है कि नहीं मैं कुछ और करूँ, you have given up on that? I've given up. हाँ, मतलब मैं अब कहता हूँ कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना. अब obviously I read the script. I want to know the director. I want to know the cast. I want to know everything. But I look at the margin in my character. There should be something to do. Yes. Yeah? Yes. Even if the hero has 50 days of work and I have 25 days of work, पहले ये चीज़ें मुझे मैटर करती थी, अब नहीं करती हैं. I'm like, let's look at my character, what my margin is, how will I do it, what is the director's vision in this character. अगर वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं तो मैं कहता हूँ let's do it. एंड रास्ते खोलने वाला तो अल्लाह मियाँ है. वो शायद इन्हीं नेगेटिव कैरेक्टर्स को करवा के he might open up a door for me for, you know, somewhere in, you know, I mean, people have ambitions, people have dreams. People have dreams to act in Hollywood. People have dreams to act somewhere else. So आपको अपना strong point पे ही हमेशा खेलना चाहिए. And that is what I've decided to do. एंड कभी ये हुआ है कि आपने ब्रेक ले ली कि मैं रुकूंगा अभी जब कोई नई स्क्रिप्ट आएगी. अब तो यू आर साइनिंग स्क्रिप्ट्स अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर्स आर्क. आप ही नहीं देख रहे गुड गाय और बैड गाय, यू लुकिंग एट द फैक्ट कि ये मुझे करना क्या है, डू हैव एनीथिंग टू डू. बट यू आर सेइंग कि एक ज़माने में आप देखते थे कितने दिन, कितने सीन्स मेरे, कितने सीन्स हीरो के. तो क्या ऐसा भी वक्त था कि आपने ब्रेक ले लिया और कहा कि नहीं मैं भी काम नहीं कर रहा जब तक वो वैसी स्क्रिप्ट नहीं आएगी? ऐसे कभी हुआ है आपके करियर? हुआ है, बिल्कुल महीनों हुआ है. की ब्रेक्स ली हुई हैं क्या? हाँ, मैंने काफ़ी, I mean, there was a time when I wasn't working for 8 to 9 months. I wasn't doing anything. And, स्क्रिप्ट्स आ रही थी और नहीं कर रहे थे? ironically speaking, scripts भी नहीं आ रही थी. That was a bad क्यों? phase. I have no idea. Scripts नहीं आ क्या रही आप थी. नए थे तब? नहीं. नया जब मैं था तो I have done so much of modeling and I've done so many ads and I got so much of love. मुझे तो हर दूसरे दिन एक ऐड की कॉल आ रही होती थी. It was in the middle somewhere. अभी कोई कोविड से पहले था या कोविड के बीच, कोविड से पहले ही था. कोविड में तो वैसे ही काम थोड़ा सा, you know, it got affected. स्लो डाउन हो गया था. स्लो डाउन हो गया था. सो आई वाज इक्का दुक्का स्क्रिप्ट आती थी वो. अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस. एक तो ये है कि वेट तो मैं अभी भी करता हूँ. इफ देयर इज अ स्क्रिप्ट व्हिच आई डोंट लाइक एंड इफ आई हैव नथिंग टू डू इन दैट स्क्रिप्ट, आई रिफ्यूज इट. आई एम लाइक मुझे नहीं करनी, ठीक है. अल्लाह का शुक्र है कि बिकॉज ऑफ दैट एक चीज़ होती है, मुझे इस पर बड़ा यकीन है कि आपका फेथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. You should have that faith upon yourself at your ability कि आप उसका अपना स्टैंडर्ड लो ना करें. You have to have that faith. यानी डेस्परेट नहीं हो जाना चाहिए. नहीं. हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और and similarly have that faith on the one above. वो एक combined faith है जिसकी बिना पर आप वेट करें. You wait for the right script and then you get it. But वो वाला टाइम जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये था कि उस वक्त काम नहीं था. And I was just sitting there and I kept thinking कि यार maybe I'll do something else. I mean, this is not working out. And then, you know, simultaneously थोड़ी बहुत होती है चीज़ें ये वाली कि simultaneously your wife's in the industry and, you know, she's going to work every day and it kind of pinches you. कोई ये कहे कि नहीं आप
तो आपको बिल्कुल भी It's a अफेक्ट नहीं human. करता. हाँ, you're human. It's in human nature, so it used to affect me, but वो phase गुजर गया. I mean, I'm happy with my work, I'm getting work, I'm looking out for margins, and plus I believe कि मैं एक ज़माने में approachable नहीं था इतना. क्यों हसन? I आप think approachable क्यों नहीं थे? I think I was quite stern and firm and not maybe इसीलिए polite. विलन के रोल्स आए हैं, थोड़ा मुस्कुराते ज़्यादा ना. एक चीज़ होती है being firm and polite, right? हाँ. We've all heard everyone say कि be firm and polite, you know. Yeah. I mean, even if you have principles, be firm and polite, but not rude. True. I used to cross that line. You'd be rude. I would be rude. I would have that emotions inside of me that would bring out that rudeness on my face, and I think that is what made me non-approachable, unapproachable. So मुझे लगता है कि बहुत सारी doings आपकी ज़िंदगी में आपकी अपनी ही होती हैं, and then you have to correct yourself to actually be approachable. क्या ये इमोशंस इसलिए होते हैं क्योंकि आपको गुस्सा होता है इंडस्ट्री के तरीकों पे, फेवरेटिज्म, रोल्स एक बंदे को ऑफर करके दूसरे को दे देना? क्या ये रेज जो होती है और ये जो रूडनेस जो होती है, इसकी रूट्स इस चीज़ में होती हैं कि आपको लोगों की वर्क प्रैक्टिसेस अनफेयर लग रही होती हैं? Partially, yes. अच्छा. And वो भी होता है. It's I wouldn't say it's just that. I would say कि it's a part of that. And part of it is hereditary as well, कि जब आपकी फैमिली में इमोशंस बहुत ज़्यादा हों, तो मुझे ऐसा लगता है अब आके स्टेज पे कि इमोशंस से ना आप कुछ यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम. यूजुअली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉरी यूजुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस, so you're talking about bad emotions, right? Yeah. सो बैड इमोशंस किसी भी आप प्रॉब्लम में आते हैं, आप इनकाउंटर करते हैं, जज्बात से कभी कुछ ज़िंदगी में सही नहीं हुआ. एंड आई नेवर रियलाइज दिस कि व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग यू नीड टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस between emotional I mean you need to have that emotional intelligence. Basically that's the right You word. need to be able to control your outbursts ना. Yes. Basically that's what you're saying. Yes. कि उस वक्त अपने आप को गुस्से को रोकना पड़ता है basically. And then sophistication मुझे अनऑर्गेनाइज कहीं मुझे शूट पे आके ये कह दे यार पानी अभी नहीं आया, अभी 10 मिनट लगेंगे. तो दिस सोफिस्टिकेशन कम्स फ्रॉम माय फादर. ही वाज इन द एयर फोर्स. अच्छा. एंड ही उनको भी समझ नहीं आती कि यार मतलब लेट्स सपोज पानी 10 मिनट में क्यों आ रहा है, क्या है, वजह क्या है. बस वो सर गया हुआ है, राइडर लेने गया हुआ है. नाउ दीज आर थिंग्स कि मुझे नहीं समझ में आती. आई फील देयर ऑफ. And I don't like to call myself, I wouldn't like to call myself sophisticated because अपने आप को कौन खुद ऐसा कहेगा. But generally in a sophisticated, decent environment, I thrive. I feel good. असल काम तो हर तरह का होता है ये लेकिन भी है. अक्सर इतना प्रिंसिपल्ड सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट नहीं होती. So I've adapted. एंगर मैनेजमेंट हो गई आपकी हो गई कुछ. है. कैसे हुई? आपने कैसे अपने आप को मेंटली ट्यून किया? क्या किसी ने समझाया? समझाया तो अनफॉर्चुनेटली जिंदगी ने समझा दिया. कह सकते हैं आप. हाँ. जिंदगी ने समझाया, काम ना मिलने ने समझाया, बेगम का रवैये ने समझाया. बेगम के रवैये यानी कि she used to tell you कि ना करो गुस्सा. That's what you're saying. Yes. Yeah. And she used to be off at times कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है. And generally Sunita she's a very good wife, a very good mother to my kids. She's a very good daughter-in-law. She's very good. And you know, me and her, we get along really well as friends now. और हम लोग बड़ा शुगर लगाते हैं साथ में. But उस वक्त ये था कि there was a phase and place where I had a lot of anger issues, and वो मैंने realize कर लिया. The whole concept of all of this correcting yourself is the realization part, which a lot of people don't realize. When I realized it, I got in touch with a therapist. I went to therapy and I was like, हाँ ठीक है, अब बात करते हैं. बात की. I went there for 3 months and she was like, हाँ अंदर बहुत कुछ है.
And I was like, हाँ है तो. And she's like, निकालना है इसको बाहर. You know, you have to forgive people. You have to forgive, like you just said, जो हमने बात की कि partially जो लोग आपको लगता है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्री है, नेपोटिज्म है, और किसी और को कास्ट कर लिया गया है, वो सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि ये लेट इट गो, होगा, यू नो, इट्स देयर, होगा, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू, बट देन हाउ यू रिएक्ट टू इट इज गोना कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर सक्सेस. Yes. तो उसने वो चीज़ें मुझ में से निकाली, लेकिन टाइम लगा. आई मीन आई स्टार्टेड लेट. आई वेंट टू अ थेरेपिस्ट व्हेन आई वाज 6 years ago. एंड मे बी आई थिंक कि अगर मैं और पहले चला जाता तो और जल्दी बेहतरी आ जाती. एंड दैट इज़ व्हाई आई एडवाइज अ लॉट ऑफ पीपल, इफ़ यू फील देयर इज़ अ प्रॉब्लम, गो एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आपके आगे की जो लाइफ है ना वो बेहतर हो जाए. योर वर्क प्लेस बिकम्स लाइक अ होम टू यू, राइट? And you don't feel burdened when you go to your workplace, and you feel at ease with your colleagues, with the directors, with the producers, because we're talking about in terms of our work, of my work. तो ये चीज़ें नेगेटिविटीज़ आप निकालें तो आप फिर खुश रहना शुरू हो जाएंगे. you'd be like, हाँ ठीक है यार, वो भी अच्छा कर रहा है, करे, वो भी अच्छा कर रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है. आप अपनी स्पेस में जो आपको मिला हुआ है आप उसमें अच्छा करो. And अगर ये सोच लें तो बहुत अच्छा है. I मुश्किल होता है. इट्स वेरी competitive फील्ड. अगर इंसान उस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए, आई थिंक उससे ही फ़ायदा है. मैं तो आ चुका हूँ, शुक्र अच्छा, अल्लाह का. zen, yes? I am there. I am mostly I look at people and I'm looking at people. जैसे बहाज आजकल, you know, he's doing so well. So I thought कि यार मैं इसके scenes देखूँ, and I've always loved the guy. He's worked with me in a serial जो मैंने एमन ने और बहाज ने किया था. And he's a very cute guy. तो मैं उसको देखता हूँ. बाकी आई मीन यू लर्न फ्रॉम दिस पीपल. देन बेबी बाजी में एक एक्टर है फजल, छोटा सा है, चाइल्ड आर्टिस्ट स्टार्ट किया था, एंड नाउ ही इज आई थिंक 20, 21, 22. एंड व्हाइल शूटिंग आई यूज्ड टू लुक एट हिम एंड आई वाज लाइक, यार फजल तुमने क्या सीन किया है. आई मीन इट वाज ब्रिलियंट. एंड आई नाउ व्हाट आई डू इज कि आई सीक्रेटली आई लर्न फ्रॉम दिस पीपल कि ये इस तरह कर रहे हैं, मुझे अब अगले किसी जगह पे मौका जब मिलेगा इन अ सिमिलर सीन, सो आई एम गोना डू दिस. So I've now become totally acceptable of what other people are doing, and also acceptable of the fact कि मैंने जो करना है वो मैंने अपना देख के करना है, दूसरों का देख के नहीं करना है And कि वो what's क्या meant कर for रहा है. you will come to you. Yes. आप कहते हैं ना कि you have faith. It's a very important part of Yes. faith to believe that. Yes. है ना? Yes. What's in your destiny will come to Oh you. yes. Oh Yeah. yes. आप बस हार्ड वर्क एंड पैशन के साथ you keep. खुश होएं. यानी आप जो अभी बता रहे थे अपने पास्ट का, मुझे लग रहा था कि आपने जो अपने लिए प्रोफेशन खुद चूज़ किया, nobody forced you, उसी में आप खुश नहीं थे. तो जाहिर है अगर आप जिस चीज़ से कमा रहे हैं आप उसमें खुश नहीं हैं तो आप घर पे भी खुश नहीं होंगे. You will be in a state of anxiety all the time. I mean, nobody forced you to become an actor, but That's true. an acting career comes with these pressures. That's true. है ना? That's true. So if you're not good enough to take these pressures, तो फिर आप क्यों आए? फिर आप क्यों आपको आए? किसी ने ज़बरदस्ती तो और नहीं बुलाया. सोशल, हमारे मास्टर में जो सोशल बुराइयां हैं वो, यू नो, दे टेक बर्थ व्हेन दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन. लाइक हसद हो गया, इनसिक्योरिटीज हो गई, नजरें हो गई, ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो अब मैं खुद भी पनाह मांगता हूँ इन चीज़ों से, और अपनी फैमिली के लिए भी मांगता हूँ, और मैं कहता हूँ यार इसका शिकार कोई भी ना बने. अच्छा, बट घर में क्योंकि आप अब एट पीस हो गए हैं, आर यू अ बेटर पर्सन एट होम ऑल्सो विद योर फादर? आर यू अ मोर पेशेंट फादर नाउ? आर यू मोर हैप्पी एट होम ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस? यस, है ना? ऑल दीज थिंग्स यू टेक दिस बैगेज विद यू होम, राइट? है ना? आई एम अ लॉट बेटर देन आई वाज बिफोर. एंड सुनीता जब अब खुद बोलती है दूसरों को, अभी हम जब हुंजा गए हुए थे, शी वाज लाइक टॉकिंग टू समवन, एंड वही बेबी बाजी पे बात हो रही थी, और बात हो रही थी कि यार नसीर भाई घर पे कैसे हैं. तो यू नो आई वाज रियली प्राउड व्हेन शी सेड ही इज़ अ वेरी गुड हस्बैंड एंड अ वेरी गुड फादर. एंड आई लव माई किड्स ऑब्वियसली, एंड आई लव माई वाइफ. मैं अम्मी अबू के साथ रहता हूँ, आई लव देम एज वेल. I love my dad because if he wasn't there for me, I wouldn't be here sitting talking to you. So I am a better person, and I take
situations as they come in a very sane manner, not with accompanied with emotional outbursts and all of that stuff. In a very sane manner, I handle अच्छा, them. लेकिन ये जो आपके पहले इमोशनल आउटबर्स्ट थे, जो आप इंडस्ट्री वालों से रूड हो जाते थे आपके बहुत उसके मैंने पहले किया है, हैं, बहुत मैंने तो किया उसकी वजह से तो आप ज़्यादा विलन नहीं स्लॉट हुए, हो आपको सकता है, लगता है? हो सकता है. हो सकता है, It's क्योंकि quite you were possible. younger then, right? हाँ, And you've always been very good looking. You have a modeling career. हाँ. फिर भी to be slotted in negative roles, हो सकता है? It's quite possible. That's what I said कि जो अपने आप को evaluate करने का और correct करने का जो journey है, वो इन्हीं thoughts के बाद आया है कि यार हो सकता है कि that guy doesn't think well of you. And he would say that हाँ ठीक है, slot him into a negative हाँ, character. और ये गुस्सा अच्छा करता है, गुस्से वाले रोल में डाल दो. हाँ. You're very believable. जब आप गुस्सा करते हैं ना, बड़ा यकीन वो आता तो है. फिर निकलता है ना अंदर से, फिर चीजें निकलती हैं. But generally now I'm at a lot of peace. I am calmer. कुछ situations में अभी भी होता है, लेकिन वो जो पहले था उससे बहुत कम है. चलिए, good for you. Yeah. I'm happy and I'm glad you're enjoying your work. I am. Because do you think that it's very important to always be seen? People Out say- of sight, out of mind की मैं बात कर रही हूँ यहाँ. People say exactly that, but I'm like, if I'm not getting what I want, तो अगर आप out of sight हो भी रहे हैं थोड़ी देर के लिए तो खैर है. थोड़ी देर के In the long run, तो आपने एक और चीज़ मैं कहूँगा कि कभी भी बुरा काम ना करे इंसान. कभी भी you have set a standard for you. You must be thinking बुरा काम क्या है. बुरा काम in the sense के I'll tell you something. I grew up watching Hollywood movies because my father was in the Air Force. उनको Indian movies या ये सब इनको पसंद ही नहीं था. तो मैं ये टॉप गन शॉपगन देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ, right? And Tom Cruise was my idol. अभी तक है. मैं टॉम क्रूज को देखता हूँ. I'm like wow, I want to become Maverick, right? तो हॉलीवुड का जो एक क्लास है ना, I don't know if you will be able to grasp what I'm trying to say, but Hollywood जब आप देखते हैं उनका way of speaking and the class that they ooze, our market is different. Our market is emotions based and societal issues based and all of that stuff. तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं इसमें कैसे incorporate करूँ. How do I incorporate that style of acting into this industry? एंड बुरे काम से मेरी मुराद ये है कि आप बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें जिसकी प्रोडक्शन लो, अच्छा, कास्ट अच्छी ना हो, पैसे भी I mean whatever you're demanding is basically setting a standard for you. वो बिल्कुल ही आप डेस्परेशन, वही जो आपने अभी बात की थी कि आप डेस्परेट ना हो इतने कि आपको कोई लेकिन भी काम अच्छा ऑफर हसन, हो. अगर पैसे कमाने हो फिर तो डेस्परेट होना पड़ता है. पैसे कमाने हो तो देखें ये 8-9 तो महीने आप नहीं छुट्टी ले सकते काम से, अगर हाँ नहीं ले सकते. हाँ, आप अगर नहीं ले एक सकते. If it wasn't for my support of my wife or my dad, yes, I mean if it wasn't for them, then I would have to take up work. बुरा काम भी करना पड़ता. हाँ किया है, सबने किया है. But then again I would still advise कि if you see that ability in yourself, you see that you know what you're capable of, तो आपके पास आएगा. ठीक है. आपके पास आएगा. You have to have that faith. You have to keep that standard. People, if they see you as कि आपकी worth ही है, you have to make your own worth, right? So if you don't make your own worth, then people will make your worth, and that can be any worth. वो कहीं पे भी That's जाके very settle good जाती है. advice. I think it's very inspirational for actors who are struggling, जो आपने कहा है. Is there nepotism in the industry? Favoritism, nepotism, camps? I think है, और favoritism भी है, nepotism भी है, but now I'm at this stage, why not? अच्छा. हाँ, अगर किसी का बाप प्रोड्यूसर है या किसी का कोई चचा है या कुछ है तो भाई वो उसको he will support him. अच्छा, और फेवरेटिज्म, अपने फेवरेट स्टार्स को लेना, किसी को कह देना तुम्हारा ये रोल है और फिर उसे रिप्लेस कर देना, ये बहुत होता है क्या? मॉरली गलत है, बहुत गलत है, एथिकली भी गलत है. और होता है, बहुत होता है क्या? शुरू में मेरे साथ हुआ है,
But अच्छा. now I don't face it that much. So Okay. I am maybe thinking that brings me to a point where I think कि शायद early in your career होता हो actors के साथ कि I think आप जब अपनी नीश बना लेते हैं ना, तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं, ये इस कैरेक्टर पे फिट है, हमें यही लेना है. शायद आप उस स्पेस पर अब आ गए हैं कि that आप उस could कैरेक्टर में फिट हैं. that could be it. है But ना? ethically and morally ये चीज़ें सही नहीं है कि आप किसी because it's very demoralizing. हाँ, I know. डिप्रेसिंग होता है. हाँ, I remember when it used to happen to me. I was like, यार, why? Why did he do it? Why? And then you needed to find out why. कि क्यों किया उसने ऐसा, you know. I'm gonna find out, and then that finding out, you ended up calling up that person, and लड़ाई करने. and he would maybe once pick up your call, but after that call, he'd be like, yo, stay away. You're getting toxic, because आप खुद toxic हो जाते हैं फिर in finding that out, right? तो it is demoralizing. मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि communication, let's suppose you're a producer, you have called me for a project, let's suppose in fla month, and for finalizing the things, you call me back after 2 months or 1.5 months. Till that whole time, the actor is wondering, यार करना है नहीं करना. और स्पेशली जिन लोगों के साथ अर्ली इन देयर करियर ये चीज़ हो चुकी है कि उनको रिप्लेस किया जा चुका हो, तो उनके जहन में आती है एक आध बार कि कि कहीं मैं यार रिप्लेस ना हो कहीं रहा हूँ. मैं हाँ. रिप्लेस ना हो रहा हूँ, या उनको कोई मेरी चीज़ पसंद ना आई हो, ना क्या हो, ना क्या है क्या नहीं है. सो अब तो खैर आई एम बियॉन्ड दैट, लेकिन ये चीज़ें होती हैं और मॉरली और एथिकली नहीं होनी चाहिए. आपके इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं बहुत सारे कि कम कम? नहीं, मेरे इंडस्ट्री फ्रेंड्स हार्डली. आई मीट विद शिजाज शेख. आई गो एंड प्ले फीफा विद हिम ऑन Xbox. And that too because I have known him since the past 20 years. And हम लोग, we usually, when I go to his Who place, wins? usually he wins. He's a very good player. Very good player. कभी कभार मेरे, you know, there are some days that are Hassan Ahmed's days and I win on But those. mostly उसके days होते हैं. Mostly उसके days होते हैं. चलो. बड़ा अच्छा खेलता है वो. तो उससे भी मेरा, हम जब जाते हैं हमारी काम की बात नहीं होती है. I mean, I'm happy for what he's doing. He's happy for what I'm doing. Apart from that, हमारी I don't meet with people as such now. I go to मैं ये अब्दुल्ला के घर, क्योंकि अभी हम प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, वैसे भी अब्दुल्ला जे वगैरह बहुत बुलाते हैं कि यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ. आई मीन देयर वेरी नाइस पीपल टू मीट विद एंड एवरीथिंग. और आप दोस्त भी कह लो उन्हें, बट दोस्त तो ये ना कि जैसे आप हर दिन या 2 दिन 3 दिन छोड़ के मिल रहे हो आप. कह दें. हाँ, तो एज सच नॉट रियली. एक पक्की इंडस्ट्री फ्रेंड है सुनीता मार्शल. Oh yes, oh yes. Any day, Yeah. any day. Do you think it's important आजकल के ज़माने में to have a double income family? Very important. She's earning and you're earning. Very important. हाँ. It's very important. And I अब वो ज़माना नहीं रहा कि वो पहले ये इश्यूज भी थे कि सिर्फ मर्द कमाएगा, औरत घर में बैठ के बस ये करेगी वो करेगी. यू नो, हमारी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें थी और शायद अभी तक हैं. कुछ घरों में है. हाँ, नहीं, काफ़ी घरों में, काफ़ी घरों में. I mean, me and you constitute only what 7 to 8, 9% of that society which does not believe in those norms anymore, yeah, which does not act that way. But otherwise, khair, anyway, we're getting off track the conversation. It is very important. Very important. Why? Because औरत को भी flourish करने का, पहले तो मैं यहाँ से start करूँगा, उसकी एक अपनी ज़िंदगी है. When you earn, you have that sense of independent feeling, क्या कहेंगे उसको, in yourself, which makes you more confident, which makes you more in control, which gives you that boost, that morale boost that you want, right? आपका थोड़ा सा ईगो भी थोड़ा बहुत होना चाहिए आपका, वो ना ईगो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, एक ईगो की वो होनी चाहिए, एक रेज होनी चाहिए. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आता है द सेकंड पॉइंट इज कि लाइक यू सेड कि a two-part income in the family, you end up doing a lot of things that you have you probably didn't imagine doing. That with both of your incomes, you can, you know, create a life that you want, you More know, luxurious. yes, that you want for yourself. You can do things, you can go on vacations, you can wear what you want, and you can create a joint system
for your coming generation कि आपने उनके लिए क्या करना है, और जब दोनों कर रहे होते हैं तो आप बहुत कुछ कर पाते हैं उनके लिए. Like we now, we think about our kids, about their education, about their life after they're not with us, or maybe after, when they turn 18, कहाँ जाना है, कैसे करना है. So we're thinking about that, and why we're thinking about it is because we're both earning, and we both have that independent mindset कि हमने अब ये करना है. Sunita is a very good, I call her my advisory committee. She's very good with advices. She plans really well. उसकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, and some things that I could never imagine myself doing. So, I mean, she's a great partner, all in all. But Hassan, I was thinking कि जब when a woman works, when a mother works, right, and perhaps there are days when the father is not working, does the Pakistani man get an ego issue handling घर के काम, बच्चों के काम? When he's the man, he is tuned genetically to think कि मैं तो जाऊंगा और ये घर पे होगी. क्या ego issues हो जाते हैं? मतलब एक होती है कि मैं क्यों बच्चों को देखूं, मैं तो काम करना चाहता हूँ, और वो काम पे गई हुई है. पहली चीज़ मैं कहूँगा, जब आपने पाकिस्तानी मैन बोला ना, तो you said it specifically, and I loved why and how you said it. पाकिस्तानी मैन है ना, ये हमारे दिमाग खराब हुए में ना थोड़े से. बिल्कुल है. और सालों से, जनरेशन से हुए में, तो ये हमारे अंदर जेनेटिकली मर्दों औरतों में ये स्टीरियोटाइपिंग आ गई है. डेकेड्स बाय डेकेड्स ये चीज़ आ गई है हमारे अंदर, और बिल्कुल है, मेरे अंदर भी थी, आई विल एडमिट टू इट. लेकिन अब आप व्हाई डोंट यू कॉल सुनीता आफ्टर दिस एंड यू आस्क हर. आई हैव बच्चों को मैंने संभाला हुआ भी है. कभी सुनीता शूट्स पे गई भी है, तो राकिन जो है, माय एल्डेस्ट वन, he was one of those kids जिसका पेट और वॉमिटिंग उसको बहुत जल्दी होता था. Sickly. Yes. So I've taken him to doctors on my own. But you never used to mind केक होता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ? Why is the mother not doing this? एक आध बार हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको जिंदगी सिखाती है वही वाली बात, राइट? तो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखे हैं, एंड नाउ आई लव इट. आई मीन सुनीता बीच में इन लोग के, when she was modeling much, she used to go to Lahore for those couture weeks and all of that stuff. 3 days, 4 days, yes. At times 6 days, 7 days. Yes. तो ये लोग मेरे पास घर पे होते थे, और हम लोगों ने प्लान किया होता था, अच्छा आज हम यहाँ जाएंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे. एंड नैंडोज यूज्ड टू बी आवर फेवरेट. हम यहाँ जाके खाएंगे, वापस आके ये करेंगे. एंड दे यूज्ड टू मैं उनका दूध बनाता हूँ, मैं अभी घर में बर्तन धोता हूँ. I do my dishes when someone's not around, when our help is not around. I take it upon myself कि मैं I'll do the dishes. You've killed the ego issues basically. I've killed it because it does not help you in any way. जैसे ही घर में कुछ शुरू होता है ना, ये नहीं आया, मैं कहता हूँ मसला ही कोई नहीं. वो 20 बर्तन पड़े होते हैं, मैं जाता हूँ, मैं धोना शुरू कर देता हूँ. एंड कोई कहता है यार ये लेट्स सपोज संडे का दिन है और घर में कोई भी नहीं है, छुट्टी है, और रात में आ रहे हैं मेरे दोस्त आ रहे हैं, एंड देन सुनीता इज लाइक यार ये गंदा हुआ है. अच्छा, शी इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस थिंग्स. मुझे कहती है यार ये गंदा हुआ है, तो हाँ गंदा तो हुआ है. सो मैंने एक कपड़ा अपने लिए रखा हुआ है जिसको मैंने वो पोछा बनाया था अपना. सो आई गो डिटॉल उसमें मिलाता हूँ मैं बाल्टी में, उसको मैं अंदर डालता हूँ और मैं उसको क्लीन कर देता हूँ. आई हैव ओनली डन दिस ट्वाइस और थ्राइस, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया है, बट आई एम लाइक कि जब आप कर सकते हैं तो टेंशन किस बात की है, और ईगो किस बात की है. अच्छा, पता है आसन, अब आप कहेंगे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जा रही है मदीहा, बट ये है मेरे दिमाग में सवाल था. लॉट ऑफ यंग एक्ट्रेसेस टेल मी कि जब हम शादी करेंगे हम एक्टर से नहीं करेंगे. बहुत मुश्किल है एक्टर एक्ट्रेस की शादी होना. क्या मुश्किल है दो लोग एक ही इंडस्ट्री में बिलोंग करना, टू बी मैरिड टुगेदर? मुश्किल है, नॉट रिकमेंडेड है. नहीं, आई वुडंट से नॉट रिकमेंडेड है. अच्छा, लेकिन मुश्किल है. एंड बहुत सारे, आप शायद कहो कि मैरिज शुडंट बी अ कॉम्प्रोमाइज़. आई वुड से कॉम्प्रोमाइज़ कुछ अच्छे भी होते हैं ज़िंदगी में, जो आपको सिखाते हैं, जो आपको दे मेक यू एंड टर्न यू इनटू अ बेटर पर्सन इन लाइफ, राइट? सो दोज आर द कॉम्प्रोमाइज़ेस आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मुश्किल बहुत है, मुश्किल है. फॉर द फर्स्ट 5 to 6 years, 7 years, me and Sunita, we've been married 15 years. So
माशाल्लाह। सो पहले 5 से 7 साल हमें वही जो मेरे एंगर इशू, मैं अपनी बात करूँगा, सुनीता के भी इश्यूज़ हैं, वो हर कपल के होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। मैं अपने इश्यूज़ के बारे में बात करूँगा कि यही जो एंगर मैनेजमेंट का इशू या चीज़ों को ना समझने का इशू या सिर्फ एक इमोशनल एंगल से समझने का इशू, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थीं। तो इन सब चीज़ों को यू हैव टू टेक अ होल्ड ऑन टू देम एंड यू हैव टू सी कि इफ़ योर पार्टनर इन क्राइम और यू नो द वन यू आर इन अ मैरिटल रिलेशनशिप विद, अगर वो बहुत ही इविल हैं, एक बात कर रहा हूँ, फिर तो यू हैव टू टेक स्टेप्स। लेकिन ये तो किसी भी करियर में हो सकता है ना, आप कुछ और कहीं करियर भी में हो होते, वो सकता है। किसी और में। यहाँ पे असल तो में, एक्टर्स का क्या मुश्किल है? अच्छा तो एक्टर्स, हाँ, यहाँ पे असल में मुश्किल ये, आई थिंक इट्स एन ईगो, मोर ऑफ एन ईगो इशू। कंपटीशन आ जाता है कि यस, मेरे पास ये काम, इसके पास ये काम, ये वाली कंपटीशन है, बात। जेलसी है, चीज़ें हैं। खैर मेरा तो वाज क्वाइट डिफरेंट बिकॉज आई मैरिड एन एस्टैब्लिश्ड मॉडल एंड एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, राइट, एंड आई वाज नथिंग व्हेन आई मैरिड हर। आई यूज्ड टू वर्क इन एन एजेंसी। तो देयर आर लॉट ऑफ कपल्स हु आर एट द सेम लेवल, जैसे एमन और मुनीब को मैं कहूँगा, दे हैव बोथ द सेम लेवल ऑफ स्टारडम। तो उनके लिए शायद आसान हुआ हो टू केटर विद ऑल ऑफ दिस। मेरे लिए शायद मुश्किल हुआ हो, किसी और के लिए और मुश्किल हुआ हो, क्योंकि ईगो आ जाता है, जेलसी आ जाती है। इफ़ वन इज़ वर्किंग द अदर इज़ नॉट वर्किंग, इफ़ वन इज़ गेटिंग कॉल फ्रॉम अ वेरी वेरी नाइस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, द अदर वंस लाइक यार मुझे क्यों नहीं आ रही, यू थिंक, एंड एंड दैट यू गो आउट, क्रिएट्स वन इज गेटिंग सेल्फीज टेकन, दूसरे को ज्यादा फैंस अप्रोच नहीं कर रहे, ये भी होता होगा। Mentally बड़कपन का tuned, मुजाहरा जो होता है ना, हाँ। वो आपको दिखाना चाहिए, वो आपको दिखाना चाहिए। आप कोई बात नहीं, अभी भी हुंजा में हुआ, व्हेन आई वेंट आई वाज टेलिंग यू कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ नहीं ली, नहीं ली तो नहीं ली। दे लाइक अस्मा बेटर, they like her cuteness, her innocence, they like her better, so fine, they're taking a selfie with her. But now I am at this stage, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आई एम लाइक यार तेरी तो बेगम है, शी इज़ योर वाइफ एंड आई फील प्राउड। And what she earns is also benefiting your family. I mean, you're both course. earning for the family, for the kids. Of So, course, you know, of course, there's eventually तो फायदा आप दोनों को ही है ना, बिल्कुल उसके बिल्कुल सक्सेस का, आपके सक्सेस का। बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स। वो आपको ज़रूरी लगता है? शायद आपको ज़रूरी नहीं लगता होगा। वो आपको ज़रूरी लगता है अवार्ड्स, नॉमिनेशंस, ट्रिप पे जाना, सबको मिलके एक प्लेन में और अवार्ड इवेंट इंटरनेशनली अटेंड करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपने कभी किया नहीं है? मैं गया था, हम टीवी के दुबई में अवार्ड्स हुए थे। राइट। I went there. I was nominated as a best actor in a soap category. हाँ। I went there. मुझे मज़ा भी आया। मैंने It's a celebrity trip, ना? Everybody, the celebrity whole trip. industry together. And I met a lot of people as well who I normally wouldn't meet because कोई लाहौर में होता है, कोई यहाँ होता है, कोई वहाँ होता है, कोई कराची में, अपने काम में बिजी हैं सारे. So I met those people and I had a great time. And I did not win, but still I had a great time. And I came back and I was like, यार कितने अच्छे awards किए हैं हम टीवी वालों ने, you know, they were really nice and I was all praised for them. But अभी जब माशाल्लाह से ये लोग टोरंटो जा रहे हैं, I think for the past 2 years, I think. Yes, I think so, yeah. Canada, yes. Canada, Yeah. they're going to Canada for the past 2 years. And we haven't gone with them. लेकिन वो फील नहीं होता कि यार हम क्यों नहीं गए। मुझे अब वो नहीं होता कि हम क्यों नहीं गए, कोई काम नहीं किया या कोई अचीवमेंट उनके साथ अभी रिसेंटली नहीं है या नहीं है, तो आई नेवर थिंक कि हम क्यों नहीं गए। आई एम लाइक ठीक है, बट आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर द पीपल हु एंजॉय ओवर देयर, हु गो देयर एंड हु हैव अ ग्रेट टाइम अमंगस्ट ईच अदर। बट मैं नहीं जा रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके लिए आई हैव एनी बैड और नेगेटिव फीलिंग्स। FOMO नहीं होता, you know what, you know, nothing like that, right? Okay. That's very big-hearted of you. अब नहीं है, पहले शायद होता, लेकिन अब ये नहीं बड़ी है। अच्छी थेरेपिस्ट है आपकी। She is also moved abroad. Okay, but tell me what's been your favorite role to date? अभी तक जो सबसे ज़्यादा आपको अपना memorable लगा? एक ड्रामा ऑटोमेटिकली कम्स टू माई माइंड इज पिंजरा, ये वाला नहीं, काशिफ निसार का पिंजरा मैंने किया था फॉर A+. उसमें यमुना जैदी भी थी।
ड्रामा इतना इन द न्यूज़ नहीं आया था बिकॉज इट वाज फॉर A+, बट वो सराइकी एक्सेंट में हमने उसमें काम किया था एंड आई लव डूइंग दैट बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर एज वेल एंड आई शॉट इट इन लाहौर, लाहौर की ठंड में. It was something that was very close to me because I really liked working with him and I loved that character. बाकी इसके अलावा I've done a lot of negative characters. हाँ, I enjoyed एक थी लैला for Express. I really enjoyed that. I enjoyed doing that character and उसमें वो वाले scenes भी जिसमें I had that chemistry with Ikra and वो वाले scenes भी जिसमें I was on the run and Yasser was trying to catch me. The way we shot those scenes were incredible. Even Darar, I would say, I loved doing that. So I think as I was nearing towards the age of 40, I've started maturing and I've started loving my work more. So अब मुझे लगता है मेरे जो best characters हैं वो अब आना शुरू होंगे. Do you think कि stories थोड़ी-थोड़ी बदल रही हैं, थोड़ी-थोड़ी करके? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल. We I'm see it glad you happening asked in that. front of हाँ. us, है ना? Yeah, I was talking to someone and they were like कि अब normal run of the mill drama. मैंने कहा अब वो अब shift आ रहा है. I mean, देखें आपके actors को जितना इंडिया से appreciation मिलती है. It's amazing. हाँ, and there's a reason for it. What? The reason is they know art. When they see stuff, they know acting. When they see, because they've been seeing it, and now उनके यहाँ तो ऐसी वेब सीरीज बनना शुरू हो गई हैं और अभी से नहीं 6-8 सालों से. So now they know what art is, right? Now they know what a negative villainish character is. तो मुझे जितना praise इंडिया से मिलता है उसका आधा भी मुझे यहाँ से नहीं मिलता. Really? Yeah, Social media पे? Yes. Instagram पे DMs आते हैं इंडिया से? Instagram पे DMs आते हैं, comments आते हैं. अच्छा. आप बाहर चले जाएं कहीं, आप किसी ऐसी कंट्री चले जाएं जहाँ पे इंडियंस पाकिस्तानीज दोनों बहुत आ रहे होते हैं. टर्की फॉर एग्जांपल अभी हम गए हुए थे लास्ट ईयर. दुबई हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया. आप वहाँ चले जाएं, इंडियंस वुड बी लाइक कमिंग अप टू यू एंड सेइंग यार सर कमाल किया है आपने. और मुझे आज तक इस तरह की कैरेक्टर्स पता होते हैं उन्हें, ड्रामे का नाम लेके बताते हैं. कैरेक्टर का नाम पता होता है उन्हें. Okay. So they know art. They know what it's all about. YouTube is such a blessing. Yes. You know, Yes. पूरी दुनिया Yes. को आपका काम नजर आ रहा है. हाँ. हाँ. I mean पैसे शायद आप पाकिस्तान से कमा रहे हैं लेकिन मोराल के लिए कितना ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी. एक्टर के. बहुत ज़रूरी. But listen, YouTube से एक सवाल दिमाग में आता है कि आप पूरे ड्रामा सेट्स पे काम करते हैं, बड़ी सी कास्ट होती है. Do you think actors have become very involved in social media? क्या हर कोई इंस्टा स्टोरी कर रहा होता है, तस्वीरें, गुड लाइट, लेट्स टेक अ पिक्चर, डज दैट हैपन अ लॉट? बहुत ज़्यादा. हाँ, बहुत ज़्यादा. आप नहीं करते? आप सिर्फ गुस्सा दिखाते हैं सोशल मीडिया पे. नहीं, अभी अगर आप मेरी फीड चेक करें तो मैंने इतनी पोस्टिंग की है जो मेरा ट्रिप Vacations था. की. Yes. तो हाँ. मैं एक वक्त पे आके परसों रात की बात है, मैं देख रहा था, मैं कह रहा था यार हसन साहब ज़्यादा नहीं हो गया ये? This is too much of. तस्वीरें अच्छी आई थी ना तो लगा. अब मैंने कहा लगा देता हूँ. But I have changed. मैं पहले बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करता था. हाँ. मैं कहता था यार ये क्या है, ये मुझसे नहीं होता. लेकिन अभी You're भी old मुझे school लगता ना, है so I you was find old it a bit school. fake, I right? was old school. But हाँ. अभी भी जो आप बात कर रहे हो ना, I think people should draw a line. I mean, the first thing when you do, what you should be focused on is when you get to set is your work. तो ये चीज़ secondary है, right? I'm sure you agree. But a lot with of me. people earn from it, na? That's the thing. They earn. So do you sometimes. So does So do Sunita I, so sometimes. do I. Yes. Yeah. बट फिर देखिए ना, आपका काम अगर इफेक्ट हो रहा है तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का? आपका मेन जो काम है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप काम सही नहीं कर रहे, विच इज़ एक्टिंग, योर मेन काम इज एक्टिंग. यू नो हाउ यू पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑन स्क्रीन. अगर वो अफेक्ट हो रहा है फिर तो आपको अपना सोशल मीडिया थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ेगा. फोकस सही करना चाहिए. फोकस सही करना चाहिए. लेकिन देन देयर are a lot of people who are very active on social media and they are great actors. They have that natural ability. They have this natural tendency. They know how to create social media content. हाँ. Knack है. अब वो यूं करते हैं, टाइम भी उनको ज़्यादा नहीं लगता, सीन्स भी वो अच्छे करते हैं. कंटेंट क्रिएशन. हाँ. सेट पे आप वीडियो नहीं बनाएंगे कि देखें हम सब बैठे हुए, रात हो गई, चाय पी रहे हैं. ये बहुत देखती हूँ ये वाले में. नहीं, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है. लेट्स जस्ट से इट दैट वे.
आई एम लाइक कि क्या है बैठे में, हर चीज़ वही वाली बात है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे मैं डालना भी नहीं चाहता. एंड देन आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट, लेट्स सपोज इफ मलिया इज़ विद मी ऑन सेट एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो, और कोई ऐसी चीज़ है जो मलिया नहीं चाहती कि वो वीडियो पे जाए. आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट दीज थिंग्स, Oh अबाउट yeah. द एटायर ऑफ समवन, about how they're looking, and you know, if someone's lipstick किसी की यहाँ गलती से लगी हुई Because है. the audience on social media can be very vicious. They can be वो brutal, पकड़ेंगे yes. यार, वो Yeah. they'll make life torture for that person हाँ, for हाँ, several days. हाँ. है ना? तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि आपको वही वाली बात आ जाती है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालने के लिए you need guts to be fair to you. और जब सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी होती है, जब हर तरफ से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं, यू एक्सपीरियंस दैट सेवरल टाइम्स, बहुत इमोशनली डिफिकल्ट डेज होते हैं. इसको तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिफिकल्ट डेज होते हैं, लेकिन इसको तो आप पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई रूटीन कह लें. बिकॉज एक तो कंट्रोवर्सी जो हम क्रिएट करते हैं उसकी वजह से, और एक कंट्रोवर्सी नहीं होती, एक बस बिकॉज आई एम मैरिड टू सुनीता एंड बिकॉज सुनीता इज मैरिड टू मी, वो तो लॉन्ग लाइफ एंड लिस्ट बिकॉज ऑफ ऑफ योर रिलीजियस डिफरेंसेस. हाँ, वो एक लॉन्ग लाइफ क्रिएट हुई भी है. Are you tired of that question though? Religious differences. अभी इतना लंबा वो सुनीता का 2 हफ्ते हुए शायद एक और पॉडकास्ट था. Are you tired of that question कि ईद कैसे होती है और क्रिसमस कैसे होती है और बच्चे कैसे? You're tired ना? I am, and I asked her कि यार, I don't want you going to such interviews, not because I don't want you going there, but because this is not doing us any good. It's irrelevant questions that, देखिए प्रॉब्लम क्या है. इंटरव्यू के स्टार्ट में जब आपने मुझसे पूछा कि हाँ ठीक है, बातें डिस्कस होती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं, प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है जब बहुत अरसे से डिस्कस हो रही होती है ना, तो एक पॉइंट आता है जब आप कहते हैं यार बस, दैट्स इट. और आप दोनों से ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं. हाँ, डोंट यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस. मैं यही तो कहता हूँ. वो भी पूछते हैं, वो सारे पूछते हैं ना. बट मैंने उस दिन इस इंटरव्यू के बाद, द गाय अपोलोजाइज्ड अपेरेंटली एंड एवरीथिंग, बट मैंने उसको कहा, मैंने कहा सुनीता ये, अच्छा मैं मना भी कर रहा था, मैंने कहा यार ये दिस गाय इज डज नॉट लुक द पार्ट, एटलीस्ट फॉर मी डज नॉट लुक द पार्ट. तो मैंने कहा आप नहीं जाओगे यहाँ पे. उसने कहा नहीं यार सही है, ठीक है, जाना चाहिए. मैंने कहा चलो ठीक है, चले जाओ. अब हम किसी को रोकते नहीं है एक दूसरे को कोई भी काम करने से. इफ़ शी फील्स इट्स परफेक्टली फाइन, आई लेट हर डू इट. मैंने नहीं रोकना, मैं क्योंकि मैं कंस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता, स्पेशली माई वाइफ. तो आई लेट हर डू इट. व्हेन शी केम बैक, वो कंट्रोवर्सी हुई. इन द एंड शी इज़ राइट कि इट वर्कड इन हर फेवर सारी चीज़ें, बिकॉज पीपल सेड शी हैंडल्ड इट वेल एंड फ्ला. बट मुझे हुआ यार ये इन लोगों के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है. यू नो, इट रादर गो टू समवन लाइक मलिया रहमान, जिसके साथ आप बात करके आपको मज़ा भी आया है. अच्छा, थैंक यू, आपको मज़ा आया. बात वही ना कि आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना. मैंने उससे कोई इसके उसके बाद कोई वो तो नहीं किया है. जस्ट सेड कि यार तुम्हें नहीं जाना चाहिए था. लाइक यार चलो, इट वर्कड इन माय फेवर. लेकिन मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान में गिवन द रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स दैट वी लिव इन, गिवन और आल्सो हमारी सोसाइटी के एथिकल क्या वैल्यूज़ हैं, आपको लगता है एक्टर की इज्जत है? बहुत इज्जत है. अच्छा, बहुत इज्जत है. मैं कहता हूँ इतनी इज्जत है कि एक्ट्रेस की भी है. यस. अच्छा. A term which defines a female actor and a male actor is an actor. ठीक है. ठीक है. हाँ. तो मैं दोनों के अच्छा बारे में बात कर रहा हूँ. सो एक्टर की जितनी इज्जत पाकिस्तान में है ना, वो कमाल की इज्जत है. आई मीन यू गो समवेयर एंड देयर लाइक, you know, from the words and from their actions, they're rolling out the red carpet for you. Oh, that's Not physically, but you know, it's there. You can feel it. You're like, gee. And मुझे तो बहुत इज्जत मिलती है. और आई एम श्योर, मैं वही बता रहा था अभी, स्कर्दू एयरपोर्ट पे बैठ के, बड़ा मज़े की चीज़ है. सो आई वॉज मेकिंग दिस वीडियो. आई वॉज एट स्कर्दू एयरपोर्ट एंड the फौजी जवान्स एंड the ASF यूनिफॉर्म्ड गार्ड्स एंड आर्मी वाले, वो भी देख रहे हैं, ड्रामा देखते होंगे. तो वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, इतनी चाय पिलाई, इतना प्यार दिया. और नसीर ऑफ बेबी बाजी, who doesn't deserve any प्यार. तो मैंने एक वीडियो बना के भेजी अपने ग्रुप पे, जिस पे सारे हैं, ये सऊद भाई भी हैं, जवेरिया भी है, जुनेद भी है, तुआ भी है, the whole cast is there.
तो मैंने वीडियो बना के भेजी, मैंने कहा यार आप सोचें यार नसीर को इतना प्यार मिल रहा है तो आप लोगों को कितना प्यार मिलता होगा। तो हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। आई मीन अच्छा। इट्स ओवरवेलमिंग एट टाइम्स। इज द मनी ऑल्सो गुड? इज्जत से मनी भी मैंने कनेक्ट कर लिया। इज द हाँ मनी गुड इन एक्टिंग? इट्स रीजनेबल, इट्स रीजनेबल। इट्स रीजनेबल। मतलब आपका रीजनेबल, गुड गुड कह लें आप, हाँ ठीक है आप गुड गुड। कह लें। आप तो हैं भी ड्यूअल इनकम फैमिली, तो आपका तो फिर भी एक अच्छा, हाँ अच्छी इनकम। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैं सिंगल होता तो कम है। रियली? नहीं, ओके। हाँ इट्स रीजनेबल से मेरी मुराद ये है कि लोग छूटते हुए बोलते हैं नहीं नहीं, मैं कहता हूँ रीजनेबल है, अच्छी है। पीपल शुड फ्रॉम गुड हाउस होल्ड शुड एंटर द इंडस्ट्री। बिकॉज देयर इज पोटेंशियल। देयर इज पोटेंशियल। हाँ। अब तो और भी ज़्यादा पोटेंशियल है। अब तो आपके लिए यूट्यूब के लिए, वेब के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए चीज़ें सिंगल हाँ, the हैंडेडली world is प्रोड्यूस हो रही हैं। growing, yes, and we have इट्स new चेंजिंग, channels coming up, वी हैव new न्यू stories being चैनल्स, told. न्यू कंटेंट, Yes. सारी चीज़ें हैं। तो अब आप आएँ, और पैसा इनिशियली मैटर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मिलेगा नहीं इनिशियली। ये आप मैंने अपनी, गेस किया है। नहीं सही वाकई। है, नहीं मिलेगा भी नहीं। और आप अपनी वर्थ बनाएं, आप प्रूव योर मेटल, वो कहते हैं ना। यानी 5-6 साल आप ऐसे ही लगा दें, हाँ क्यों नहीं, उस वक्त कैसे खाएंगे? जो मिल रहा है उससे खाएंगे। ओके, दैट्स सैड। आई डोंट थिंक इट्स सैड, आई थिंक देयर इज अ डाउन साइड टू एवरीथिंग इन द सेंस कि शुरू में यू, इमरान अशरफ की बात करते हैं। इमरान अशरफ के अर्ली डेज़ में मुझे उसकी स्ट्रगल के बारे में बहुत पता चला, वो मेरे साथ बैठता भी था। सो इमरान अशरफ ने, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल पीरियड, सो ही टोल्ड मी मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं यहाँ जाता था। और मैंने देखा भी उसको, खुद भी चलता हुआ आ रहा है, बस से उतर के यहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। सो नाउ इट्स पेइंग ऑफ हेविली, राइट? सो आपको वो, यू हैव टू डू दैट to actually get to a point where you can say, because I don't believe in shortcuts, but I was looking for shortcuts in life. Everybody tries. हाँ, but now I've realized कि shortcuts are not meant for everyone. One, two, बेहतर ये है कि आप you take that path which is a bit longer, because you keep learning on that path as well. You keep proving your mettle through your hard work as well, or it makes you into a better man at the end of the day. Okay, So you put in learn those from years. it, ना? You Yes. learn from it. Yes. अच्छा, I'm wrapping up now. Tell me, क्या इंटरव्यूज भी ध्यान से दे रहे हैं? हाँ, मेजर करते हैं interviews, अपने वर्ड्स? हाँ, पहले करते थे? पहले I don't think मैं अभी भी कर रहा हूँ। I think a lot, मुझे ऐसा लगता है a lot has to do with the person taking the interview, how they are taking it. मैंने तो अपना अभी कोई भी वर्ड मेजर नहीं किया if I talk to you about this interview. Okay, that's good. But yes, I've become a better person, a mature person, कि मुझे ये ज़रूर पता है कि automatically nothing is, I'm not trying to filter एक anything. दिमाग में बेल नहीं चलती कि हाँ, नो नहीं। दिस माइट बी कंट्रोवर्शियल, ये नहीं बोलता, ये नहीं। सोचते हैं? नहीं, अब नहीं नहीं, सोचते। अभी जहन में नहीं आ रहा मेरे। बट यस, ये ज़रूरी है कि इफ़ आई गेट कॉल्स फ्रॉम अदर पीपल फॉर इंटरव्यूज़, तो मैं देखता ज़रूर हूँ कि किसके पास मैं जा रहा हूँ, हिस्ट्री क्या है, क्या कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं. So if there's a controversy which is, you know, like an undue thing in my life, which is like not needed in my life, then I would rather not go to that person. How do you deal with controversies? I mean, I sometimes wonder कि जब एक्टर हर जगह ट्रेंड कर रहा होता है, हर पेज छोटा बड़ा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके बारे में लिख रहा होता है, फिर नीचे लोग उसे गालियाँ दे रहे होते हैं, वो एक्टर्स क्या कुछ दिन इंटरनेट से हट जाते हैं? क्या वो फ़ोन को अलग करके कहीं बैठ जाते हैं कि बस मैं किसी से बात नहीं करूँगा कुछ दिन? नहीं, जैसे अभी हमने शुरू में बात की कि सुनीता वाली जो बात थी, जो मैंने पब्लिकली, आई वेंट पब्लिक विद दैट, और मेरे जो वीडियो थी जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली, तो उसमें जो कोई प्लेथोरा ऑफ कमेंट्स आए हुए थे, उसमें से 90% वर नॉट इन माय फेवर. ठीक है, जाहिर है आप पढ़ते होते हैं, कोई अगर ये कहे कि मैं नहीं पढ़ता तो वो झूठ बोल रहा है. आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आप You can't help yourself, right? पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, एंड आप पढ़ रहे हैं. और इसी तरह जिस तरह आप हैं, उस तरह के भी कुछ लोग थे अच्छे कि हसन सर आपको ये नहीं कहना चाहिए था, यू शुडंट हैव गॉन. हाँ, जो प्यार से कह रहे हैं, कुछ गालियाँ भी दे रहे हैं, कुछ चीज़ें भी कर रहे हैं.
I respect people's emotions, ठीक है? I really do. I respect your emotion in saying कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, because you're looking at the bigger picture. You're looking at Hassan Ahmed and Sunita Marshall Ahmed together. And kids, yeah. And the kids, yeah. Yeah. So जो लोग प्यार से कहते हैं, मैं उनकी तहे दिल से बड़ी इज्जत करता हूँ. लेकिन जो लोग गालियाँ देते हैं, और एक तो चलो एक होती है जिस सही चीज़ पे गालियाँ देना, एक होती है जो जिसपे आपका काम भी नहीं है, एक बुरी चीज़ है जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस पे आप, जैसे रिलीजन पे मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई इंसान है जो मुझे कहता है कि लानत हो तुम्हारी शक्ल पर कि तुम अपनी बीवी को कन्वर्ट नहीं कर पाए, ठीक है? अब दिस इज द एग्जैक्ट कमेंट. अच्छा. हाँ, ये तो लोग मैं, कहते हैं, मैंने भी पढ़ा है हाँ, कमेंट, तो मैं, आपके पेज पे पढ़ा है. हाँ, तो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये लोग इनका, अच्छा मैं उनको नहीं जवाब देता, बट आप चलें ठीक है, आप अग्री नहीं करते कि मैंने एक नॉन मुस्लिम से शादी की है, लेकिन क्या आपका मुझे लानत देना बनता है? नहीं बनता. Who are you to play God? यस. देखिए, ख्वाहिश तो एक साफ सी बात है, कभी मुझसे किसी ने पूछा नहीं, ख्वाहिश तो मेरी भी है that she converts, right? But conversion is something which has to be done or From the meant from the heart, right? तो and very importantly, कन्वर्जन उस सूरत में पॉसिबल है, स्पेशली इस मुल्क में, अगर मेरा किरदार अच्छा होगा. मेरा किरदार अच्छा होगा बिकॉज शी इज़ लिविंग विद मी एंड आई एम मुस्लिम मैन एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम. मैं नमाज पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, और साथ में अगर मैं गुस्सा दिखा रहा हूँ या कोई और चीज़ कर रहा हूँ या चीज़ें कर रहा हूँ, इट विल मेक द अदर पर्सन थिंक कि यार ये तो सही नहीं है. अब तो आपका किरदार अच्छा हो गया ना. हाँ, तो हो जाएगा. और मेरी ख्वाहिश है, मेरी बिल्कुल ख्वाहिश है कि सुनीता converts to a Muslim, and it is my heartfelt desire. But ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ें, these things take time, and मुझे इस बात पे बड़ा यकीन है कि there will be a right time for everything. There is a right time for everything in life. वो मुझे बड़ा यकीन है कि God gives you a right time, an indication of the right time coming for everything, and there's gonna be a right time for this. और अगर कोई कहता है कि नहीं अब तो टाइम निकल गया, नहीं, टाइम कभी नहीं निकलता. टाइम इज़ ऑलवेज देयर. टाइम इज़ बाय योर साइड इफ़ यू वांट इट टू बी बाय योर साइड. अगर आपने ये सोच लिया कि निकल गया, फिर तो निकल गया है, और अगर नहीं निकला है तो इट विल हैपन, एंड आई नो वन डे इट्स गोइंग टू हैपन. Okay, let's see. इंशाल्लाह. And then coming back to social media controversies, आप कुछ देर क्या वो comments नहीं पढ़ते? फिर क्या वो जो लानत हो और ये वो जो नेगेटिव गालियाँ आती हैं, क्या कुछ दिन आप ऑफ हो जाते हैं, ऑफ द ग्रिड? पहले हो जाता था, अब नहीं होता. You become very cool, हाँ, very good. अब नहीं होता. अभी ये जो लानत वाला कमेंट मैंने आपको बताया है, You didn't care. मैं आपको दिखाऊंगा शायद. मैंने उसको लिखा वापस, मैंने कहा आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, थैंक यू. दैट इज व्हाट आई रिप्लाई टू दैट पर्सन, बिकॉज आई वाज लाइक कि यार लोगों को, आप मुझसे अगर लड़ रहे हो, आपका नेचर या मेरा नेचर आपसे बुरा है और मैं आपसे कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आई एम प्रोवोकिंग यू या आई एम इंसाइटिंग यू. बट मैं अगर आप अच्छे हो तो आप, यू डोंट नीड टू चेंज, you don't need to speak to me in that same tone. You don't need to come up to my level, which is really low level, right? True. तो ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, हमें करना पड़ेगा. हाँ, और स्पेशली जब आपकी लाइफ स्पॉटलाइट में होती है तो आपको सीखना पड़ता है. We started with social media questions, we're ending with them, such is life. But we talked about your work, and I really think you are inspirational to young actors, क्योंकि आपने अपना नीश ढूंढा. आपको जो प्लेइंग फील्ड मिली है उसी में आप अपनी पाथ बना रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जाहिर है पाकिस्तान में काम कर रहे हो तो पाकिस्तान की ही रिस्ट्रिक्शंस और privileges के साथ रखते हुए करेंगे, आपको. right? I'm glad you mentioned the niche because I believe I've created my niche. You might become our favorite villain. 10 साल बाद मैं कहूँगी हमारे favorite villain से मैं इंटरव्यू कर रही हूँ. वो भी सही है. That's gonna be fine with me. Whatever you do, I think it's important to enjoy it. Thank you so much for this interview. Thank you for having me here. Thank you.